Developer console. Developer console. That is good. Right now, hold on. Fine. Now, till yesterday, what we had done was हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, ऑब्जेक्ट को फेच भी करके देखा था, एंड वी हैड लर्नड ऑफ व्हाट आर द डीएमएल ऑपरेशंस जो हम इस पे कर सकते हैं. नाउ व्हाट टुडे वी विल बी डूइंग इज मोर ऑफ द लॉजिकल हैंडलिंग जो हमको कोड के अंदर करने का जरूरत पड़ता है. राइट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉजिकल हैंडलिंग, हम वो सब अभी चेक करेंगे, एंड हाउ टू डू दैट वी विल गो थ्रू दैट इन डिटेल. राइट, so for now, hold on, let's do one thing. What was this query returning? I think we had deleted this whole thing. All the records were deleted. Okay, there is one test account still remaining. Let me just delete the account list. And why was this getting deleted? Okay, let's remove this part. So, right, let me do one thing first. I'll just delete all the existing accounts, right? Right, hopefully it's all deleted. Right, now we are at blank. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डीएमएल हमने देखा, एसक्यूएल हमने देखा. नाउ इन लॉजिकल ऑपरेशन जब आप कर रहे हो, जब भी आपको कोड एक्चुअली लिखना है, सो इन दैट केस व्हाट यू विल प्रोबब्ली बी डूइंग इज यू वोंट बी वर्किंग विद सिंगल ऑब्जेक्ट. What you will be working with is probably bulk of objects, maybe 10, 12, 15, जो भी क्राइटेरिया है, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके एक साथ आते हैं. So in that case, the first thing that you need to know is if you have to repeat some logic, right? कोई भी logic है जो आपको repeat करना है, so then you will have to write something which is called a loop in the Apex code. Now loop से as name से ही आपको शायद समझ आ रहा हो कि जो बार बार चलता रहे, right? That is what you need to write. Now in Salesforce you can write loop, right? Let me just give you an example. So suppose in my case what I want is, अभी हमारे पास कोई टेस्ट अकाउंट है नहीं, right? So I want to create say 10 accounts, right, जो मेरे होंगे. So let's take the example of, हम लोग अकाउंट कैसे बना रहे थे, अकाउंट टेस्ट अकाउंट is equals to, let's see, this is equals to new account, right? Now what were the mandatory fields for the account जो हमको populate करना पड़ रहा था? Account name. Account का name, right? So by name standard field, so we'll write just like this, is equals to test account say 1, right? And insert SC. इससे क्या होगा, हमारा एक अकाउंट इंसर्ट हो जाएगा, right? Yes. Now what if I want to create 10 accounts? Sir, 10 records create करने हैं. I can repeat this code 10 times, right? That will create 10 accounts. Is that correct? Yes. Yes. But does that seem logical कि जैसे 3 लाइन है तो मैं 30 लाइन लिखूंगा to create 10 accounts? Instead, if there was some optimized way जहाँ पे हमको पता है यही 3 लाइन बार बार चलानी, right? So what would be the way we should be following? We should have some kind of looping logic जो बार बार चलता रहे, right? Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes. sir. So Yes, sir. that is what you have in your Salesforce called
loop. Now how to write a loop? So obviously the keyword for loop is your for. Okay, now for के बाद आप लिखेंगे condition and then a scope. This is your syntax for a for loop. For loop से आपको क्या हो रहा है कि मतलब ये हमारा लूप है, जो भी हमको कोड लिखना है दैट विल बी इनसाइड दिस ब्रैकेट एंड आई हैव टू गिव अ कंडीशन कि कब तक ये लूप चलना चाहिए, राइट? नाउ दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द लूप. नाउ लूप में भी दो टाइप के लूप्स होते हैं, सो फॉर लूप भी दो टाइप के होते हैं, सो विल कवर द बोथ वंस. तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि हमको चाहिए कि 10 बार लूप चले, सो आई नीड समथिंग टू काउंट, राइट? सो दिस इज मोर ऑफ योर बेसिक लूप, राइट? यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम इंटीजर वेरिएबल लेंगे, राइट? I is equals to 0. अगर मैं 0 से शुरू करता हूं तो मेरा लूप कितनी बार चलना चाहिए? मैंने आपको बोला 10 बार चलना चाहिए, राइट? 10 तक. So what I'll do is I'll write a condition I is less than 10. Okay, and हर बार काउंट होता रहेगा, तो I will write I plus plus. Now what does this loop mean? इस लूप का मतलब है कि I का वैल्यू 0 से मैं शुरू करूंगा, लूप तब तक चलेगा जब तक I का वैल्यू इज लेस देन 10 एंड हर एक बार लूप चलने के बाद I का वैल्यू शुड इंक्रीज वन टाइम. Okay, so let me do one thing. I'll just for now write a system.debug and I'll just print the value of I ताकि आप लोग समझ सको कि हर बार क्या हो रहा है. प्लस I, हर बार I का वैल्यू प्रिंट होता रहे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो अभी बनते रहेंगे. Let's call this method plus demo method. Let's run this. Now you will see आउटपुट में क्या आया मेरा. 0 to 9 numbers. 0 to 9 आउटपुट. हर I बार की मैंने value. खाली I का वैल्यू प्रिंट किया, तो हाँ. यू विल सी हर एक बार जब लूप चला है I का वैल्यू 0 से शुरू हुआ है एंड 9 तक बढ़ा है, which means 10 times it has run, right, and closed. So my loop is now basically fulfilling my requirement कि मेरे को चाहिए था एक लूप जो 10 times चले, that is satisfied here and you can see the output how each time this line is basically increasing the value of I plus 1 एंड ये तब तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. जैसे ही ये कंडीशन फेल हो जाएगा, मींस I इज नॉट लेस देन 10, तो लूप बंद हो जाएगा. नाउ इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, sir. कि लूप का स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे हो रहा है, राइट? फाइन. नाउ अब ये तो हमारा हो गया. सो व्हाट वी वांटेड वाज 10 हमको अकाउंट बनाने हैं. सो लेट्स डू वन थिंग. होल्ड ऑन, where is this? Right now I pulled in the developer console. Fine. अभी मेरे पास इस एनवायरनमेंट में क्या क्या था? अकाउंट्स में एक भी अकाउंट था नहीं. टेस्ट अकाउंट सारे आई हैव डिलीटेड, सो देयर आर नो टेस्ट अकाउंट्स राइट नाउ, राइट? So let's do one thing. Let's go to our developer console and
Now what we'll do is, let's put this inside the loop. Account and insert account. Now seems good. ये मेरा चलना चाहिए. अगर ये लूप 10 बार चल रहा है तो अभी मेरे 10 अकाउंट बन जाने चाहिए. Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Wait, let's run this and see what happens. चलो loop चला. Let's see. Yes, 10 times the loop ran. Let's check. 10 accounts got created. Right? All 10 accounts which I wanted got created. Now, so this code is basically now working as per our requirement. Loop चल रहा है, 10 account create हुए. But you cannot just have that I for loop चलाने के लिए. Sometimes what if you reuse that I? जैसे कि क्या हुआ, अभी अगर आप देखेंगे कि मेरा 10 अकाउंट क्रिएट हुए, बट 10 के 10 वर्ड टेस्ट अकाउंट 1, टेस्ट अकाउंट 1, टेस्ट अकाउंट 1, राइट. ये जो वेरिएबल है, डू नॉट restrict it to just inside this. You have to find ways to also use it inside your code. How? Let me do one thing. First I'll delete all these जो भी क्रिएट हुए हैं, उन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ. Let's just refresh and you will see all 10 accounts are deleted. What if instead of name को मैं test account 1 hard coded की जगह I write it as this I. इससे क्या होगा? तो उसमें इंडेक्सिंग आ जाएगी सर. चेंजेस होंगे. टेस्ट अकाउंट 1 2 3 ऐसा 1 2 3 4 5 6 आएगा, राइट. 0 से 9. Yeah, you got the concept, but you missed something. ये शुरू होगा टेस्ट अकाउंट 0 से. Yes. Right. So what I should do is instead write it like this. ताकि जब 0 की वैल्यू के लिए अकाउंट क्रिएट होगा टेस्ट अकाउंट 1 and so on and so forth till test account 10. Let's run this. Let's see what happens. This time proper account should get created, hopefully. Loop run as per our requirement. Let's refresh. And all the accounts got created, right? Yes. Now, this is your basic structure of your loop. जहाँ पे आपको पता है लूप कितनी बार चलेगा, आपने वो वेरिएबल के हिसाब से सेट किया एंड आप लूप को उतनी बार ही चलाएंगे, राइट. बट देयर इज वन इशू हियर. मैंने आपको बोला था कि Salesforce हैज restrictions on almost everything, right? So what does that imply here? That implies कि जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो इंसर्ट ही 10 बार चल रहा है, एंड दैट इज देयर इज अ लिमिट कि कितनी बार इंसर्ट चल सकता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर. सो इज दैट अ गुड प्रैक्टिस 10 बार चलना? No. नो सर. No, right? So then what I should do as a recommended practice, as best practice, I should find a way कि 10 बार ना चला के मैं इसको जितना कम बार चला सकूं, that is better. That is when with logic you have to use your knowledge of collections. See, हमको लिस्ट के बारे में पता है. what is list, right? Yes. Let's create a list of account, just a blank list, right? just एक हमने blank list बनाया account का, and instead of inserting each account separately, what I'll do is I'll add the newly created account to the list. जो account का variable हमने बनाया उसको मैं इस list में add कर दूं. And then what I can do is loop एक बार चल गया तो फिर अब list के अंदर कितने account रहे? 10 10. अकाउंट.
10 के 10 अकाउंट मेरे डाटाबेस में जाने के बजाय टेस्ट अकाउंट 1 2 3 4 सारे के सारे लिस्ट में ऐड, लिस्ट में ऐड हो। राइट। सो देन आई विल जस्ट एक ही बार हम इंसर्ट करेंगे, पूरे लिस्ट को एक साथ इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि आपका डीएमएल ऑपरेशन इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे भी चलता है और लिस्ट पे भी चलता है, राइट। सो वी विल यूज लिस्ट इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग ईच टाइम सेपरेटली। आई विल कंबाइन ऑल ऑफ देम और फिर एक साथ इंसर्ट करें। तो इससे डेटाबेस में अपडेट कितनी बार करना पड़ा? एक ही बार। एक ही बार, बट काम मेरा वही हो गया। And this you guys should always remember when working with Apex. अगर आप कहीं पे ऐसे सिंगल रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो someone will ask why. Do you know for sure खाली एक ही रिकॉर्ड रहेगा? Why not use list? मल्टीपल कंबाइन क्यों नहीं कर रहे? कोड में शायद ऊपर कुछ 2 इंसर्ट हो रहे हो, नीचे 4 इंसर्ट हो रहे हो, सबको एक साथ इंसर्ट करो, राइट। So using DML operations on list is the recommended practice, and this is not just for insert. This is for insert, this is for update, and this is for delete also, right? Is this part clear? Okay, I see a hand raised. Yes, Amit. Sir, what is the upper limit for DML operations? See, okay, that is a good question. So with respect to governor limit, मैं आपको कुछ बताता हूँ पहले, right? So with Salesforce, governor limits are of 2 types. Okay, one is your org level governor limits. जैसा कि होता है, सपोज आप दिन में कितना कर सकते हैं, जो हमको सेटअप से दिख रहा था, राइट। दोज थिंग्स अप्लाई फॉर लाइक कॉल आउट्स कितने कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यार आउटबाउंड ईमेल कितने भेज सकते हैं, ये सब चीजों का एक लिमिट रहता है। देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शनल लिमिट। नाउ ट्रांजैक्शनल लिमिट इज व्हाट समथिंग स्पेसिफाइज व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ये जो मैं डीबग से एक मेथड कॉल कर रहा हूँ, राइट। सपोज मेरा ये एक मेथड है, इसके अंदर से और 2 मेथड कॉल हो रहे हैं, उसके अंदर से और 4 मेथड कॉल हो रहे हैं। तो एक बार मैं जैसे इसको क्लिक कर दे रहा हूँ, जब तक ये 6 के 6 मेथड कॉल होके एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, कोड कहीं पे रुकेगा? No, sir. No, sir. नो, राइट। सो दिस इज योर वन ट्रांजैक्शन, मतलब वन कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन विदाउट एनी स्टॉप्स इज योर वन ट्रांजैक्शन। नाउ जो लिमिट्स एक ट्रांजैक्शन पे लागू होती है, दोज आर कॉल्ड पर ट्रांजैक्शन एपेक्स लिमिट्स। नाउ ये जो डीएमएल वगैरह का जो लिमिट्स होता है, दीज आर एप्लीकेबल ऑन अ ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैं कोड में लेट्स से मेरे पास 1000 क्लासेस है, राइट। उन 1000 क्लासेस में आप जाके ढूंढो, मे बी शायद 6000 7000 जगह मैंने ऐसे डीएमएल कमांड लिख रखे होंगे, कहीं इंसर्ट कर रहा हूँ, कहीं अपडेट कर रहा हूँ, कहीं अपसर्ट कर रहा हूँ, राइट। मे बी दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज मेरे किसी भी एक ट्रांजैक्शन में कितने डीएमएल चल रहे हैं। सेम थिंग ऑल्सो हैपन्स विद मेरे एक ट्रांजैक्शन में कितनी बार एसओक्यूएल चल रही है। So the most important one you have to remember is for DML it is 150, for SOQL it is 100. Right? Let me show that actually. Since you are asking, what I'll do is, चलो ये insert तो है. Let me insert the account also, and इस loop को हम कर देते हैं 200. Right. Hold on. From 0 it is starting, right? Let's keep it at 149. Now 150 तक तो चलेगा ही. Oh, ये वाला error दे देगा. Wait. Let's keep it till 150 and let's run this. I should have clicked on select log. Anyway, log to click. Fine. So you will see till 150 I chala. Why is it? Oh, it's not letting me scroll to the bottom. No issues. We'll check here. All right. Create हुए मेरे 150 accounts.
Yes, sir. right? Yes, sir. Now let's just go back and make it. क्या आया मेरे पास? System limit exception. Too many DML statements 151. Right? Now what does that mean? यहाँ पे इशू क्या हुआ? You have to think. जब एपेक्स के किसी ट्रांजैक्शन में इशू होता है तो वो पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाता है। मतलब अगर 151st अकाउंट पे गड़बड़ आया so that will not mean कि पहले के जो 150 इंसर्ट हो गए हैं वो हो गए हैं। No, it will roll back everything. It will come back to zero. ओके सर, मतलब एक भी इंसर्ट नहीं होगा। हाँ, exactly. None got inserted. There is another operation, जैसे हम DML ऐसे करें ना, insert, एक और एक क्लास होता है डेटाबेस करके,